Hello kids, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Okay students, today we are going to do the concept of carryover sums. You know what is carryover? Carry means borrowing something from the other. Okay, so today we are going to do the concept of carryover sums. So without wasting any time, let's get started with this concept now. Okay, so carry means किसी से borrow करना, किसी से ले लेना, right? So the first question has already been done for you. Subtract 349 from 761. अब 761 में से हमें कितने माइनस करने हैं? 349. Subtraction means minus करना. Okay. So first of all, we will write down the numbers 761. This is 1, right? Minus 349. So 1 is less than 9, right? So 1 में से 9 तो नहीं माइनस हो सकते. So हमने यहाँ से 6 को कट किया, 6 से हमने 1 लिया. और ये 1 क्या बना हमारा? 11. And 6 becomes 5. And this 7 में से 3 minus हो सकते हैं. 7 is greater than 3. Now 5 is also greater than 4. 11 is greater than 9. Okay. So अब हम minus कर सकते हैं. 11 minus 9, 2. 5 minus 4, 1. 7 minus 3, 4. So the answer is 412. Okay. So हमने क्या किया? अगर हमारा ऊपर वाला नंबर जो होता है टॉप नंबर इज लेस देन द बॉटम नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे बिग बनाते हैं. कैसे बिग बनाते हैं? कैरी करके. 1 नंबर कैरी किया हमने नियर बाय नंबर से, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द कैरी ओवर सम्स. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, so now these are the sums we will do by our own. अब ये हम खुद करेंगे. 546 minus 209. Now, अब आप क्या observe कर रहे हैं? That 6 is smaller than 9. तो सबसे पहले हम 6 को क्या करेंगे? हम बिग बनाएंगे, राइट? कैसे बिग बनाएंगे? 4 से 1 लेके. अब 4 से अगर हम 1 ले लेंगे तो भी 0 से माइनस हो जाएगा, राइट? So we will carry 1 from 4 and we will carry 1 from 4. It becomes 16 and 4 will become 3. अब 3 से 0 माइनस हो सकता है, right? Now 16 minus 9. 16 minus 9. That is 7. Right? Now 3 minus 0, 3. 3 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं माइनस करते हैं, 0 means nothing. अगर हम 3 में से कुछ भी माइनस नहीं करते, 0 माइनस करते, so answer remains the same. Next, 5 minus 2. 5 में से 2 माइनस किए, 3. So your answer is 337. Okay, now let's do the next one. Now here, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे? 4 में से हम 0 माइनस कर सकते हैं, यस. 3 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं, नो. सो 3 को हम बिग बनाएंगे, राइट? हाउ वी विल मेक बिग? बाय कैरी ओवर. 7 से हमने 1 कैरी किया, 3 becomes 13 and 7 will become 6. Now we can subtract. 4 minus 0, 4. 13 minus 6, 7. And 6 minus 4, 6 minus 4, 2. So the answer is 274. Okay. Okay. Now let's do the next one. 9 is greater than 6. 2 is greater than 5? No. So we will make big number, right? 2 को हम big बनाएंगे 5 से. So again with the carryover method. 7 से हम 1 borrow लेंगे, that is 12. 2 becomes 12 and 7 becomes 6. Okay. Now 9 minus 6, 3.
12 minus 5, 12 minus 5, 7. 6 minus 6, 0. Yes, 6 में से अगर हम 6 ही ले लेंगे तो आंसर will be 0, right? So the answer will be 73. Now the next is 327 minus 198. ऊपर के सारे नंबर बिग गए? No. 2 is smaller than 9. So 2 को बिग बनाएंगे, right? 2 को हम बिग बनाएंगे. We will take 1 from 3. 2 becomes 12 and 3 will become 2. Right? Now 7 minus 8. Sorry. 7 को भी तो हम बनाएंगे बिग, right? 12 में से अब ये बिग हो गया. अब हम 12 में से भी 1 ले लेंगे 7 के लिए. 7 becomes 17. 12 becomes 11 and 3 becomes 2. Right? हमने क्या किया? I'll do it again. See, 3 big number है 1 से, 2 small number है 9 से, and 7 भी small number है 8 से. Okay? So अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों numbers को big बनाना है. So कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 12 को big बनाएंगे, फिर 12 big बन जाएगा, फिर यहाँ से 1 लेके हम 17 को big बनाएंगे, right? So 3 को कट करेंगे. 3 में से हम क्या लेंगे? 1. 2 becomes 12 and 3 will become 2. Now again 12 को कट करेंगे. 12 will become 11 and 7 will become 17. Now 17 minus 8. So the answer will be 9. Now 11 minus 9, 2, and 2 minus 1, 1. Okay? So this is how you have to do the carryover sums. Okay, so here is the last example. 614 minus 456, right? So हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? That 1 is smaller than 5 and 4 is smaller than 6. So first of all, we have to make these two numbers greater than 5 and 6. So कैसे हम greater बनाएंगे? By carryover or borrowing the 1 from the nearby number, right? So 6 से हमने 1 लिया, 1 becomes 11, right? And 6 will becomes 5. Now again, we will cut this 11. 11 becomes 10 and 4 will becomes 14, right? So 14 minus 6, 8. 10 minus 5, 5. 5 minus 4, 1. Okay, so the answer is 158. Same goes with this example also. 900 minus 634. Now these two numbers are smaller, 0, 0. So first of all, we have to make these two numbers greater, right? So we will carry over 1 from 9 and like this. 9 will becomes 8, 10 will becomes 9 and 0 becomes 10. So 10 minus 4, 6. 9 minus 3, 6. 8 minus 6, 2. So the answer is 266. Okay students, I hope you understand this concept very well. Still, if you have any doubts, then please do comment in the comment box. And it's a request that please do practice of these questions again and again, right? Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you so much.